the recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sir Adnan Ahmed Usmani. I welcome all of my students. Recite dua Rabbi zinni ilma. Ay Allah, mere ilm mein izafa farma. Ali Faisal, mic is not working. Ali Faisal is having an aeroplane F-16 with him. Now we start our class. Creating charts in Excel. Okay, here we are here types of chart, component of chart, creating a chart, formatting a chart, creating a combo chart, and a spark line in the last. Already we have done lots of practicals in the computer lab, and just we are revising our topic of chapter number 2. So you will got some marks in this revisions worksheet and revision of 15 marks, because I will give you in this session of 3 weeks 3 different worksheets and 3 chapters that we are done in the midterm. So just we are revising the topic, then I will explain you the worksheet and you will be submitting by Thursday. It's better that you will submit in the Google Classroom because it saves my time and your time. What about the other subject is depend upon you and depend on that teacher, Sir? Who is teaching you. Okay? Sir, Yes, can you kya send problem? this in the WhatsApp group? Yeah, I will, after explaining today, every time everyone know my nature, I will share in the WhatsApp group as well as in the Google Classroom. Sir, what we have to do in here? सिर्फ एक मिली है, वर्कशीट तो सिर्फ एक मिली है. दूसरी अभी दूंगा, पहले समझ तो लो, रिवाइज तो करने दो मुझे जरा सा, फिर वर्कशीट भी समझाऊंगा. मैंने दोनों चीजें डाउनलोड की हैं पीडीएफ में. आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल गिव द अनदर असाइनमेंट. सो यू हैव टू सबमिट 2 असाइनमेंट इन द गूगल क्लासरूम. मैं बता दूंगा, अभी पहले पढ़ तो लें, उसकी अभी से टेंशन शुरू हो गई है जी. पहले समझ तो लें. क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल. हुसैन रीड करो उसको. चलो शाबाश मौलाना हुसैन साहब, स्टार्ट रीडिंग दिस. आई एम टेकिंग क्लास. सर हम करें? यस यू कैन रीड. Creating chart in Excel 2013. A chart is a practical representation of data. Chart make it easier for us to understand large quantities of data. They help us see the relationship between different parts of the data. Microsoft Excel support various types of chart. वायरस नहीं है, various type of chart. Virus type of chart नहीं. various type of chart. You enter data in tabular from and use it to create a chart. A chart in Excel is linked to data in the worksheet. If the data is modified, the chart will change too. Yeah, when you draw table in the Excel, this is the example. Now read the example. There is a tabular form table has given, and because selecting this table, you can create any of the chart by going in the insert chart menu. Now read again the second slide. Type of chart. You can create a chart from the data entered in a worksheet. We will use the data in the worksheet shown here to create chart of different types. It shows the renewal and expenditure of a company. In 5 years, year 1, year 2, year 3, year 4, and year 5. Yes. So after this class, I will talk with you. Okay, read it. I did not listen to your voice. Something happened bad. सर स्क्रीन नहीं आ रही. सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज भी नहीं आ रही ना स्क्रीन आ रही है.
नहीं सर, आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी स्क्रीन भी आ रही है। नहीं आ रही भाई, अरे यार मुझे तो आ रही है। हमें नहीं आ रही। नेट इशू होगा। अच्छा, अब्दुल्ला बिन नईम का भी नेट इशू है। नेट से बिल्कुल सही बैठा हूँ, नहीं भाई, तब भी मुझे वो जो आवाज नहीं आ रही। इस पे लिखा हुआ है ना, वो नहीं मुझे भी आ नहीं आ रहा। रही। जी अब आई आवाज। नहीं आ रही। जी नेट की थोड़ा इशू आ गया सर था। पढ़े, ये रीड कर लिया इन्होंने? सर पढ़े रीड कर लिया था इन्होंने? दोबारा से। सर कर लिया था रीड। अच्छा चलें अगली स्लाइड पे आ जाएं। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी टाइप्स ऑफ चार्ट आ रहे हैं, इसको रीड कर लें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट यू हैव? रीड आउट। टाइप ऑफ चार्ट: लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, 3D sticks, column chart, bar chart, stack chart, pie chart, donut chart, area chart, radar chart, 3D surface chart. Very good. Now line chart. Read the definition of line chart. A line chart compare trend in data at equal interval. Line chart are useful for depicting the change over period of time. They are a good they are a good choice when you have many points to plot on. When data trends are important, production of sale trend over a period of time can best be shown with the help of line chart. आगे production. सर पढ़ लिया ना सर? बस सही. Column chart. A column बात नहीं chart. करें. एक मिनट बाकी लोग माइक बंद करें. Close the mic. चलें. A column chart shown change in data over period or time, or it और इट सर ये और इट की बात क्या लिखे हैं? Over a period of time, it illustrates comparisons among items. और इट illustrate comparison among item. Categorize or organize horizontally and value what Your English reading is very weak. What is your name? Abdullah Tariq. Is this Abdullah Tariq or Abdullah bin Naeem? सर अब्दुल्ला बिन नईम। सर ये समझ ही नहीं आ रहा सर। तो मैं पढ़ूं? This is about the column chart. Is very simple. Is giving the definition and as shown in the figure. सर कभी स्क्रीन जरूरी कभी स्क्रीन जरूरी सर। मैं वो हाथ से कर रहा था, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा कोई और रीड कर लेता, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला, you have to improve your English. You will read the next slide. Who will read now? Who will read now? सर मैं पढ़ूं? सर मैं Yes. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Read out. Who is reading? क्लास हो रही है। मैं पढ़ूं? Column chart. I am reading. जब मेरी क्लास हो जाएगी मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर आ जाऊँ। मेरी क्लास हो रही है। अदनान भाई का नेट नहीं है, स्कूल का नेट है। अदनान भाई नेट थोड़ी चलाते हैं। सर सर अलीफा से रीड करो। सर मैं रीड भाई करूं? आप लोग इतने शर्मा रहे हैं। यू लाइक अ गर्ल, यू आर सर मैं कर रहा हूँ, रीडिंग द स्लाइड्स। कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ रीड। सर लेकिन चलो, स्क्रीन ठीक ही है। नहीं हुई शेयर। अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से वो शेयरिंग चली गई। यस सर, यस सर। मैंने कैमरा खोल दिया गलती से। ओके स्क्रीन। Okay, we are back. Let me go on my screen. Now read fast.
Column chart. A column chart shows changes in data over a period of time, or it illustrates comparison among its items. Categories are organized horizontally and values vertically. Each data point in a series is represented by a column that rises from the x-axis. Column charts are useful when the height of individual points is more important than the trend in a series. Sir, Okay, very good. Now, 3D sketch chart, column chart. 3D stack column chart. A 3D stack column chart shows a part to a whole. Bar chart. A bar chart illustrates comparison among individual items. Categories are organized vertically and values horizontally. A bar chart can be described as a column chart column drawn sideways. Okay, very fast reading. His reading is very good. Ali Faisal is very good in reading. Scatter scatter chart. A scatter chart plots each data point with a marker. Unlike a line chart, the x-axis of a scatter chart has number and not text labels. X-axis tick marks spaced according to their values and not just evenly spaced along the x-axis. Ali Faisal, give me the answer. Did you make this chart in the computer lab Yes, sir. when you Yes, come in sir. the? Yes, sir. I made this scatter chart. Do you understand the function of this chart? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Now we're moving on the next slide. I'm not going Scatter to extra chart. that. No. Pie chart. Come on the pie chart. Pie chart. Pie chart is used to plot data for a single data series. The pie chart shows here represent the expenditure future of a company for the past 5 years. Each data point is represented by on one slice of the circular pie chart. The size of each slice is proportional to the value it represents. All the data points taken together make a complete circle. So you understand this chart? You like this chart? Yes, sir. Okay, you It have look, made this it chart in the look computer like lab? wheel. It look like wheel. Oh, good. Now, this is a donut chart. You eat donut? Yes, sir. Yes, sir. I like. Okay, read it down. A donut chart shows a relation of part to a whole. Unlike a pie chart, it contains more than one data series. Each ring of the donut chart represents a data series. In the chart shows here the inner wing is for expenditure and the outer one is revenue. Okay, now the area chart. Area chart. An area chart is similar to a line chart, but the data point markers are not displayed and the area beneath the lines is filled with color. You can also plot series one on top of another producing a total. An area chart emphasizes the magnitude of change in data over time. It is mainly used for representing sales and production figures. Radar chart. Radar chart. A radar chart plots data in concentric shapes. Each data series is plotted along a separate axis from the center point to the outer ring. Lines connect values from the same series. Okay. 3D surface chart. 3D surface chart. A 3D surface chart creates a three-dimensional view of data. A topographic map is an example of this type of chart. Component of a chart. Component of a chart. Let us now understand the various component of a chart. Chart area, plot area, axis title, y-axis data table. Chart table, data table value, grid line, legend, x-axis. Okay. Data label. Oh. Read it. Data label. It refers to the many data entries from the which a chart is derived. X-axis. It is a horizontal axis of the chart. It is also known as the category axis. Data label x-axis. Okay.
Y-axis, Y-axis. y-axis it is the vertical of the chart. It is also known as the value axis. The value of each data point is plotted on the axis. Chart title. It is usually placed at the top of the chart and help the user understand what the chart represents. Y-axis and Now, chart title. okay, can you change the title of the chart? Do you have an experience of that? Yes, sir. Do you understand how to change the title and Yes. how to change the Yes, sir. values First in we the click chart? at first we click at the top of chart and write this and the right name. What do you write? Edit the title. This is called Yes, the sir. edit the title. Edit Okay. the title. Yes. Now another one. Axis title. Axis title. It is a title given to an axis. A 2D graph has two axes x and y, and a 3D one has three x, y, and z. Chart area. It refers to the area within with which all chart components are found. Here it is surrounded by a line. नहीं यार. Chart area and axis title. Yes, sir. Okay. Plot area. Plot area. Plot area. It is a rectangular area bounded by the two axes. The axis and the y-axis define the two sides of the rectangular plot area. Plot area. Okay. Legend. Summarize the data series. A unique color or pattern is assigned to each data series to make it easier A to unique distinguish color them pattern. His visually. voice is missing. Where he has gone. Ali Faisal, internet is not working. I think so. Yes, sir? Hello? Sir? There's some voice issue. 17 students. Yes. Ali Faisal, क्या हुआ? What's the problem? No, sir, कुछ नहीं हुआ. आपकी आवाज क्यों कट रही है? अच्छा सर, हम अच्छा, चेक आवाज करते कट हैं रही एक थी बीच मिनट. में भी. अच्छा 10 मिनट है, रुक जाओ, मुझे काम भी करवाना है. 10:40 हो गए, टाइम पूरा हो चुका है. बस इतना काफी है. बाकी आप इसमें से रीड कर लीजिएगा. सही है सैम? यस सर. बाकी सर आप आप वो मैं वर्कशीट ग्रुप सेंड पे कर दिएगा. मैं वर्कशीट वर्कशीट सेंड. भी भेज रहा हूँ अभी. अभी यस हाथ सर. का वर्कशीट भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है और ये इसमें हेल्प आउट करेगी. तो मैं वर्कशीट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं बचा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है. तो ये मैं यस सर. 7A के ग्रुप में डाल रहा हूँ. ठीक है. यस. और गूगल क्लासरूम में भी असाइनमेंट डाल रहा हूँ. ठीक है. और जो आ है गई सर, हमारे पास आ गई. आ गई ना? यस सर. ठीक है. अच्छा अब जो है हम एक काम करते हैं, गूगल क्लासरूम में जाते हैं. गूगल 7A यहाँ दे दूँ असाइनमेंट. एक दिन में 2 हो जाएंगे. इसकी डेट थोड़ी सी आगे कर देता हूँ या आप लोग दोनों कर लेंगे एक साथ. एक वाला तो आपने पहले किया हुआ होगा ना वो. क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल. सर चैप्टर नंबर 1 की आपने सेंड किया, चैप्टर नंबर 2 की नहीं की. कर रहा हूँ. ऑल द ओके स्टूडेंट्स सर. कंप्लीट वर्कशीट. वर्कशीट टास्क ऑफ चैप्टर 2 बाय थर्सडे. ये भी 15 नंबर की. ठीक है. ड्यू डेट 10 तारीख. 2 दिन है. टॉपिक कंप्यूटर 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 कंप्यूटर. असाइन कर दूं? हो जाएगा? यस सर. यस सर. अभी अभी कर लेंगे. नहीं होगा? कौन कह रहा है नो सर? हो जाएगा सर. सर सर टेंशन नहीं ले. हाँ ये बात नहीं कीजिएगा. अब्दुल्ला भी नहीं हो जाएगा. यस सर, आराम से होगा. हुसैन सर हजरत कौन अली. सा असाइनमेंट? सर असाइनमेंट तो बता यही दें, मैंने मैं अभी कर ग्रुप दूंगा. पे एक वर्कशीट. अरे सर इनको पता ही नहीं है. आपने अभी स्क्रीन शेयर बेटा करके अभी डाला है.
ओ सर बस ये क्रिकेट में मेमोरी बाइट्स में सर। बेटा ये छांगा वांगा में रहता है, इसको क्या पता बेचारे को। मेरा हाँ सर प्याला पता चल गया। बच्चा, ये प्याला मुन्ना, ये वर्कशीट है, ये 5 मार्क्स की जंबल वर्ड दिए हुए, हु एम आई दिया हुआ है, सर और आपने सर कुछ आवाज चीजें पहले भी की हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस पे जंबल वर्ड में क्या आंसर आएंगे और वर्ड सर्च में क्या आंसर आएंगे। आप ये 5 मिनट में कर लेंगे। क्रिकेट में मेमोरी बाइट्स में। साइम टाइम रिकॉर्डिंग एंड करके अपलोड कर देना, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास। साइम सर एक मिनट सर से हाँ, बात बोल करनी कर- है साइम से। बोलो। साइम बोलो। यार क्या कहते हैं साइंस का ना पेज नंबर 92 के क्वेश्चन सेंड कर दो, मेरी बुक नहीं मिल रही है। भेज दिया। शॉर्टकट क्यों मारा है? अच्छा इंटरनेट से देख ले। और कोई क्वेश्चन करना है हुसैन आपको? नो सर नो सर। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जबरदस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी वीडियो आज अपलोड होना चाहिए ओके सर। ताकि मैं ग्रुप पे शेयर करूं। क्या अल्लाह सर? हाफिज।